नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, good morning. Dear students, welcome to this class of mine. Today, in this class, I will tell you how to attempt literature section in your English paper. Although I have written here that this particular class is meant for the students of classes 10th and 12th, yet the students of other classes who have English literature as one of the main subjects must watch this video. My experience tells me that a large number of students make grammatical errors, spelling mistakes, and they fail to include value points in the answers they write in literature section. It is not very difficult to score 100 in English. When I say I am not exaggerating, I am not making any overstatement that one cannot get 100 out of 100 in English. One of my students of DPS R.K. Puram scored 100 out of 100 in English last year. His grammar was perfect. He never made any spelling mistake, and he would include all the value points in the answers he wrote. So, I am also motivating you that if you use a correct grammar, a good vocabulary, and include all the value points in the answers you write in literature section, you can also score 100 out of 100. In this class, I am going to give you last minute important tips guiding you how you should attempt the literature section in your English papers. Before I tell you those important tips, please subscribe the channel. The first point is very, very important, which you should always keep in your mind at the time of writing an answer in literature section. Maintain a proper sequence of tenses while writing an answer. Most of the answers are written in past tense. What I see is that the students start writing some answer in past tense. They will write one or two sentences in past tense. They will switch over to present tense. Then again come back to past tense and go back to present tense. Sometimes they write a very long sentence without knowing how to use a relative pronoun or other conjunctions. They mix past tense and present tense in the same sentence. This mixing of tenses is a serious mistake. यदि आप एक ही सेंटेंस में पास्ट भी यूज करते हैं और प्रेजेंट भी यूज कर लेते हैं, ये एक बहुत सीरियस मिस्टेक है।
यदि आप पास्ट टेंस में आंसर लिख रहे हैं तो थ्रू आउट आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट 2 days. This is a wrong sentence. I should not use will in the subordinate clause. In place of this, I should say, he told me that he would complete the project within the next 2 days. In place of will, we should use would. Similarly, when you are writing an answer in past tense, you will use would in place of will and shall. You will use could in place of can. You will use might in place of may. And you will have to understand the correct use of past perfect tense. If the rules of reported speech are clear to you, you will not make this kind of mistake. Let me elaborate how this sequence of tenses should be maintained. यदि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है उसमें भी जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। यदि प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब का टेंस होगा वो मीनिंग के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। पास्ट में भी आ सकता है, प्रेजेंट में भी आ सकता है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब इज इन ईदर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच विल नॉट चेंज। लेकिन नहीं, कभी कभी मीनिंग चेंज होता है तो मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब लेना चाहिए। लेकिन लिटरेचर में आंसर लिखते हुए आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो वर्ब का जो टेंस है वही वर्ब का टेंस आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज करेंगे। तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर पास्ट टेंस में आप आंसर लिख रहे हैं तो थ्रू आउट पास्ट टेंस मेंटेन कीजिए, उसमें प्रेजेंट टेंस मिक्स मत कीजिए। इफ योर आंसर डिमांड्स बोथ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, then you can do one thing. You can divide your answer in 2 paras. In one para you can use present tense, in the second para you can use past tense. But try to avoid the mixing of tenses. ये नहीं होना चाहिए कि एक टेंस प्रेजेंट में है उसके बाद एकदम पास्ट में लिख दिया, फिर पास्ट में है फिर प्रेजेंट में आ गए, प्रेजेंट से। ये जो मिक्सिंग है ये बहुत सीरियस मिस्टेक है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपको, ये मत कीजिए। अधिकतर आंसर पास्ट टेंस में होते हैं तो पास्ट टेंस को मेंटेन कीजिए थ्रू आउट योर आंसर। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो आप आंसर प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। पॉइंट 2, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, statements and sentences in each chapter and make their meanings clear to you. By the time you reach your board exam, you will have done at least 5 or 6 readings of each chapter. At the time of revision, you just try to keep those important words, statements
and sentences in your mind. When you include those important words, statements, or sentences in the answers you write related to a particular question, your answer looks very good, worth reading. If you write a good answer, your examiner will get impressed and he will give you excellent marks. Point 3, include all the relevant value points in the answer you write. I have used relevant. Never use any irrelevant value point. If you include any irrelevant point in the answer you write, the answer will look very bad. That will not relate to the question you have been asked. तो हमेशा ध्यान रखिए कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे वैल्यू पॉइंट्स, जो रेलिवेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं, वो आपको इंक्लूड करने हैं। इररेलेवेंट वैल्यू पॉइंट नहीं देना है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे वैल्यू पॉइंट्स याद नहीं हैं तो कहीं इधर उधर से इररेलेवेंट पॉइंट लिया, उसमें इंक्लूड कर दिया। दैट इज़ अ सीरियस मिस्टेक। यह गलती नहीं करनी चाहिए। आपको जो भी वैल्यू पॉइंट्स उस गिवन क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड में है, you write those value points. Point 4, develop an ability to write answer to an extrapolative question. What is the meaning of extrapolative? Let me tell you the meaning of extrapolate. It means what you have understood about a particular chapter, what you can infer from that particular chapter, and what conclusion you make after having gone through that chapter. So you will have to develop an ability in you to write an answer on such a question. And when you write answer to an extrapolative question, you should always mention the name of the author. If you mention the name of the author right in the very first sentence of that answer, it will be very good. So you have to develop that ability कि आपने उस चैप्टर से क्या अंडरस्टैंड किया है, आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसी के बेसिस पे वो आपको वो आंसर वो आपको डेवलप करना है। तो ये एबिलिटी आपको अपने अंदर प्रोड्यूस करनी है। Point 5, keep the central idea of each poem and the name of its poet in mind. The reason behind this is that the whole poem is based on its central idea. You must also know the name of the poet. When you write an answer, you should always try to use the name of the poet. It will create a very good impression on your examiner. He will think that you know each and everything about that poem. तो हमेशा ध्यान रखिए कि पोएम अपने सेंट्रल
आइडिया पर आधारित होती है, इसलिए उसका सेंट्रल आइडिया जानना जरूरी है और पोएट का नाम भी हमेशा याद रखिए। पॉइंट 6, यूज आर्टिकल्स आ, एन एंड दी appropriately. Most of the students use these articles a, an and the inappropriately. They must know that a and an are indefinite articles. They mean either one or any. The is a definite article. When you are talking about a particular thing, a particular object, or particular statement or particular word, then you use definite article the. So don't use them according to your choice. ये नहीं कि जहाँ आया वहीं ए एन दी लगा दिया। ये मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को यूज़ करते हुए कि कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आ एन दी यूज़ कर दिया। ये गलत है, ग्रामेटिकली इस हैबिट को चेक करना है। पॉइंट 7, नो स्क्रैचिंग्स और कटिंग्स। इफ़ यू डू scratchings or cuttings in every second or third line in the answer you write, your examiner will think that this particular student is somewhat confused. So don't create that kind of impression on him. कभी भी आप scratchings और cuttings नहीं करेंगे। Dear students, I have just given you 7 very important last minute tips guiding you how to attempt the literature section in your English papers. If you follow these 7 important tips, you will definitely score excellent marks. In the next class, I will tell you how to write a very good article. Till then, goodbye. Please do like and share this video. Don't forget to click the button subscribe, press the bell icon on all to get updates. God bless you all.